Hello guys, welcome to Shiksha Academy. Today we will discuss about some important question answer session of electrical engineering from various topics. So let's start. The first question is the defining equation for V1 and V2 analyzing a two-port network in terms of impedance parameter. So we have to know about the two-port network, what is two-port network and what is the impedance parameter, then we can solve this question. Well, this is a typical two-port network. It consists of a black box and two pair of terminals. You can see two pair of terminals. This is number one pair of terminal, and one dash and two dash, the second pair of terminal. And there consists a black box. This black box consists network. As per analyzing a two-port network, we are not concerned about the internal circuit inside the black box. We are only concerned about the voltage we are getting in two terminal. We can say any of the two terminal as input terminal and other is output terminal. We are saying this terminal as 1 and 2, this terminal is input terminal, and 1 dash 2 dash as output terminal, and the current I1 and I2. Okay, so V1 is input voltage and I1 input current, and the output voltage is V2 and I2 is the output current, right? And in two-port network we have some analyzing tools like Z parameter, Y parameter, H parameter, hybrid parameter also, and transmission line parameter, ABCD parameter ये एक साथ है. Okay, ABCD, Z impedance parameter, admittance parameter, hybrid parameter, and ABCD transmission line parameter. Okay, later we will discuss in my two-port network video, we will discuss about all these four parameters. But now in short, in brief, we will discuss about the impedance parameter. What is impedance parameter? Impedance parameter is V matrix equals to I matrix into Z matrix. This is how we can denote impedance matrix Z. Impedance parameter is just a tool to express input voltage V1 and output voltage V2 in terms of I1 and I2. That means current I1 and I2. This is also function of I1 and I2, right? This is also function of I1 and I2. So how the equation looks like? If we write the matrix, complete matrix, then V1 V2, input voltage output voltage matrix, there is Z parameter matrix, and current I matrix, current matrix I1 and I2. Guys, this is 2 cross 1 order matrix, right? This is 2 cross 1 order matrix, and this is also 2 cross 1 order matrix. So it should be 2 cross 2, right, to get 2 cross 1 from multiplication rule. Then this matrix is denoted as Z11, Z12. There are 4 terms, of course, Z21 and Z22. If you multiply this, you will get V1 equals to Z11 I1 plus Z212 I2, and V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2, right? Clear? So you can see the B option is right. Okay, let's go to the next question. Okay,
So the next question is a filter that allows high and low frequencies to pass but attenuates any signal with a frequency between two corner frequencies is a notch filter, band pass filter, band stop filter, multi-band filter. First of all, we have to know the what is filter. So what is filter? Filter is a specific circuit which eliminate or reject some frequency, some signals of that frequency. I mean, filter is a circuit which will reject some particular frequency, particular frequency signals, and passes some other frequency signals. That mean मानो कि एक filter है जो लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर की मतलब क्या है? लो पास फिल्टर की मतलब लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल होता है उसको पास कर देगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होगा उसको रोक देगा, रिजेक्ट कर देगा। ओके, एंड व्हाट इज हाई पास फिल्टर? सो हाई पास फिल्टर विल बी that will pass the high frequency signals and will stop the low frequency signals. Okay, this is how filter works. Filter actually मानो कि हाई फ्रीक्वेंसी के मतलब सपोज 50 हर्ज 50 हर्ज जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी है इसको पास कर देगा और इसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, नहीं पास करने देगा। ये आउटपुट वर्सेस दिस वन इज आउटपुट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, राइट? सो now you know what is low pass, what is high pass filter, right? We will see what is band pass filter and what is band stop filter. So what is band stop filter? In case of band stop filter, it will stop a particular frequency band. मानो कि वो लो फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को पास करने देगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले भी पार्ट को पास करने देगा, पर ये जो F1 एंड F2 जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इसके अंदर इसके बीच वाले जो भी फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को वो रोक देगा। अगर F1 इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज है, F2 इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज है, तो 50 की 100 के अंदर जितना भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होगा उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको नहीं पास करने देगा। ये है बेसिकली द वर्क्स ऑफ फिल्टर। What is band pass filter then? Band pass filter actually reject filter actually reject all the high frequency, all the low frequencies and all the high frequencies, and only pass a band of frequencies, the opposite of band stop filter, you may say. Now what is a notch filter? Notch filter is a band stop filter which have a very narrow band, okay, which have a very narrow band is called band notch filter, right? एंड व्हाट इज मल्टी बैंड फिल्टर? मल्टी बैंड फिल्टर क्या होता है गाइस? वो है कि वो फिल्टर एक से ज़्यादा बैंड को स्टॉप कर देगा, राइट? लाइक दिस, देखो ये बैंड को भी स्टॉप रिजेक्ट कर दिया, ये बैंड को भी रिजेक्ट कर दिया। ये है मल्टी बैंड फिल्टर। ये कैसे हमको मिलता है? ये अगर हम कैस्केट पे दो और दो से ज़्यादा बैंड स्टॉप फिल्टर को यूज़ करते हैं तो वी विल गेट अ मल्टी बैंड फिल्टर इनिशियली। ओके, सो द आंसर विल बी हियर, द आंसर विल बी हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है और बाकी सब फ्रीक्वेंसी को, वो टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज नोन एज बैंड स्टॉप फिल्टर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-phase star connected 1000-volt alternator supplies, okay, the star connected, right, supplies power to 500 kilowatt delta connected induction motor, 500 kilowatt delta connected induction motor. If the motor power factor is 0.8, lagging, its efficiency is 0.8, ध्यान दीजिए 0.9 efficiency है, then the current in each alternator and motor phase current पूछा है respectively and nearly। तो आपको क्वेश्चन शायद पता चल गया होगा। अभी देख लीजिए एक रफली डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो इफ वी कंसिडर इट अल्टरनेटर वाइंडिंग एंड दिस इज डेल्टा कनेक्टेड लोड, here induction motor
0.8 power factor lagging, right? So the alternator is feeding the load of induction motor of 0.8 power factor and 0.9 efficiency. So what is efficiency? Efficiency equals to eta equals to output by input, right? Output by input. So where output is 500 kilowatt. 500 kilowatt is the output of the induction motor. So what is the input? What is the input from the alternator side? It will be in kilowatt. It will be, input will be 500 by 0.9 in kilowatt, right? In kilowatt. So as we know, P equals to, power equals to root 3 of VI cos phi, right? So we are getting here that I equals to I means the current from the side of alternator, where the alternator is star connected. That is why the line current is equals to the phase current. So I equals to P by root 3 V into cos phi. That means we are getting here 500 by 0.9, but as it is kilowatt, we will multiply it by 1000. Sorry guys for the bad handwriting, I am using my phone. Anyway, 0.8 power factor and V is 1000, right? So it is 400.9. We are taking as 401 ampere, right? 401 ampere. Okay, so this is the current, the phase current from alternator side. Now what is the current from current in the motor phase? So as you can see, motor is delta connected. We know for delta connected network, I am removing it. We know for the delta connected network, phase current equals to line current by root 3. Remember it guys, for delta connected network, phase current equals to IL by root 3, and for star connected network, I phase equals to IL. Okay, so this current which is coming from there is line current, and this is phase current, right? This is phase current IL by root 3. So we have to divide 401 by root 3. So we will get the answer. The answer will be 231.5, right, ampere. So right answer will be P. Let's go to the next question. Okay, let's go to the next question. In a PMC instrument, the swamping resistor is used to. पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पे स्वैम्पिंग रजिस्टर क्या होता है, उसके बाद उसका यूजेस जानेंगे. तो व्हाट इज, लेट्स टेक अ PMC टाइप एमीटर. There is a shunt and there is swamping resistance. Okay, so this is shunt. If you assume here the I is the current, and current to be measured by the ammeter, and then the shunt field current should be like ISH, and the meter current will be IM. IM means I minus ISH, right?
So the PMC type instruments are very much sensitive toward the change of temperature. अगर temperature change होता है तो PMC type instruments are very much sensitive toward it. That is why what we have to do, we have to compensate the, अगर वो sensitive होगा तो temperature जब एमीटर कुछ देर के लिए वो करंट को मेजर करेगा तब उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा. इट विल देयर विल बी अ चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द कॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज. देयर विल बी अ error introduced in the result. So if we want to eradicate this error, we have to put swamping resistance. We put swamping resistance to eradicate this error. uh, what is swamping resistance? Swamping resistance has zero temperature coefficient, right? Zero temperature coefficient. जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट. फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो है जीरो. एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, मोर देन 20 to 30 टाइम्स देन द मीटर रेजिस्टेंस, राइट? 20 to 30 टाइम्स. सो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी जीरो है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट की मतलब यही होता है कि हमको पता है ना ये फॉर्मूला कि अगर टी डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा. अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पे आर जीरो है तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो अगर अल्फा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अगर जीरो हो गया तो द फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस. So in case of swamping resistance we use zero temperature coefficient material. So the change of resistance with the change of temperature is zero. Okay, theoretically it's zero. And as the resistance of the swamping resistance is very high, so if the temperature change affect the meter resistance, but as the swamping resistance value is much higher and it has no change of resistance due to temperature change, so the total resistance will be more or less same. As the swamping resistance has a high value than the meter resistance and swamping resistance has no effect on temperature, so as temperature has no effect on swamping resistance, that is why the total resistance of the meter will be more or less same. So we can eradicate the problem of temperature variation and due to that the error. So the option C is compensate for temperature variation will be true, right? Let's go to the next question. Okay, next question is also from the swamping resistance. Which one of the following material is used for the swamping resistance of moving coil instrument? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सी मटेरियल है जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस से हम यूज़ करेंगे? तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो है ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, राइट? कुछ देर पहले ही बोला कि ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. विच मटेरियल हैव ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट? वी नो द मैंगनीन शो, वी नो द मैंगनीन एंड यूरेका शो ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक. दैट मीन इसका जो टेम्परेचर के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस की कोई चेंज नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी विल यूज मैंगनीन हियर. द ऑप्शन बी इज राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Cogging in an induction motor cost. This is very famous question. We know all the cogging, crawling phenomena of induction machine. And in the next session, in the upcoming session, we will discuss about the induction motor cogging, crawling phenomena in details. But for now, we are discussing it briefly. Cogging in an induction motor is caused, right? Cogging क्या होता है? Cogging तब होता है जब स्टैटर पोल एंड रोटर पोल की जो नंबर होता है, जो स्टैटर पोल की नंबर एंड स्टैटर स्लॉट, इट्स स्टैटर स्लॉट की नंबर, स्टैटर स्लॉट आई एम डिनोटिंग एज एस, सफिक्स एस, स्लॉट ऑफ स्टैटर, एंड
डिनोटिंग एज रोटर स्लॉट ए सफिक्स आर। ओके, अगर इसकी नंबर इक्वल हो जाए, स्टैटर स्लॉट एंड रोटर स्लॉट की नंबर इक्वल हो जाए, या तो स्टैटर स्लॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट एन इंटू एस आर। एन की वैल्यू कितना हो सकता है, 1 2 3, इंटीग्रल इंटीग्रल होना चाहिए। तब क्या होता है, ये जो रोटर है या ये जो स्टेटर है, ये इसके अंदर जो एयर गैप है ये बहुत छोटा रहता है। अगर एयर गैप नहीं छोटा होगा, इफ दिस एयर गैप इज नॉट स्मॉल, देन the problem of poor power factor will arise। पावर फैक्टर बहुत ही पोअर होगा, इसके लिए एयर गैप को छोटा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एयर गैप छोटा होता है और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तब जो स्टैटर टीथ एंड रोटर टीथ है उसके अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अलाइनमेंट फोर्स, मैग्नेटिक अलाइनमेंट फोर्स काम करता है, राइट। जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट फोर्स इस रोटर को मैग्नेटिकली लॉक कर देता है, इसलिए कॉगिंग को हम मैग्नेटिकली लॉकिंग भी बोलता है, कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स जो मैग्नेटिकली लॉक दी रोटर। if the starting torque tau s is less than the magnetic force, the alignment force, then the rotor failed to start। that is why हमारा जो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। सो कॉगिंग इन एन इंडक्शन मोटर कॉस्ट किस लिए होता है, क्योंकि ये जो स्लॉट्स है वो स्लॉट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स, सेट स्लॉट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स। सो आंसर बी विल बी द ट्रू। ओके, राइट। Okay, next question is about a single phase transformer is rated 110440 volt and 2.5 kVA, leakage reactance measured from the low tension side, that means 110 volt side, 110 वोल्ट की साइड से 0.06 ohm है लीकेज रिएक्टेंस मेजर्ड, द पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस। सो नाउ द व्हाट इज पर यूनिट, there are upcoming video about per unit system, but now I am discussing it as per unit reactance, xpu will be, we know per unit means actual value, we know per unit means actual value by base value, right? So xpu equals to actual by base value. So we, from the question we can see the actual value is given 0.06 ohm, right? So the x actual is 0.06. we have to calculate the xb, that means base value of the reactance, leakage reactance. So what is leakage reactance base value? The formula is kV, kilovolt square by MVA rating of the transformer, right? So here we can see 110 volt, so kV पे convert करेंगे तो कितना आएगा, 110 into 10 to the power minus 3 स्क्वायर। ये तो वोल्ट पे था ना, इसको किलो वोल्ट पे ले गया। और एमवीए कितना होगा, ये देखो 2.5 केवीए है, नॉट एमवीए, सो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एमवीए, राइट। सो कितना आएगा, देखो 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वायर है, 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 3, सो डिनोमिनेटर पे 10 क्यूब आ जाएगा, राइट, 10 क्यूब आ जाएगा। तो ये इस तरह होगा 110 by 2.5 into 10 cube, राइट। सो इसको कैलकुलेट 110 स्क्वायर था, 110 स्क्वायर।
So we will get 4.84 ohm. What is it is base value, right? It is the base value. So now we can calculate the per unit value. So x p u will be xa actual value by xb base value is equals to 0.06 by 4.84. So we will get the answer from here. The answer is 0.1 0.0 wait 0.01239. Okay, that means 0.0124 is the answer. Okay, this is the answer, 0.0124 per unit. Okay, let's go to next question. Which one of the following faults occurs more frequently in a power system? Grounded star delta, double line faults, LLG faults, single line to ground faults. Guys, we all know the single line to ground faults is the most common faults, right? It happens more commonly. If we create a table about types of fault, here types of fault and percentage, राइट? अगर 100 फॉल्ट होगा उसमें से कितना फॉल्ट क्या हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, एक रफ स्टैटिस्टिक्स है, राइट? सो ट्रिपल एल जो फॉल्ट है, ट्रिपल एल फॉल्ट होगा 5%. 100 में से सिर्फ 5 फॉल्ट ट्रिपल एल होगा, लाइन फॉल्ट. LLG लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ये होगा कितना, 10%. LL लाइन टू लाइन फॉल्ट कितना होगा, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, 15%. एंड LG लाइन टू ग्राउंड कितना होता है, 70%. सो याद रखिए, लाइन टू ग्राउंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट. ओके, so single line to ground fault will be the right answer. Common type of fault, most frequently happen. Next question is from DC motor. The field current is decreased in shunt DC motor, the speed of the motor. पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि what is the relation. We know that back EMF equals to P phi N by 60, right, into Z by A. What is P? P is the number of pole. Phi, what is phi? Flux per pole. What is N? N is speed in RPM. That is why we divided by 60. And Z is number of conductors, and A is number of parallel path. For wave winding we take A equals to 2, and for lap winding we will take A equals to number of poles. अगर 4 पोल की मशीन है तो A equals to 4 ही होगा. ओके, अब हम यहाँ पे P जो है नंबर ऑफ पोल्स, ये कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ A पैरेलल पाथ, ये डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी वाले लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, कौन सी वाले वाइंडिंग है, तो ये भी कांस्टेंट है. तो वी विल टेक in varies as, that mean n varies as EB by phi, right?
n varies as EB by phi. That means speed varies as, we know EB equals to back EMF equals to terminal voltage minus IA RA by phi, राइट। अगर ये इक्वेशन पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे एक मोटर है, ओके, दिस वन इज आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, ओके, करंट इज IA, सो बैक EMF तो यहाँ पे जनरेट होगा, दिस वन इज VT, बैक EMF EB, yeah, so VT equals to EB plus IRA, we are getting through KVL, so we can write as EB equals to VT minus IRA, right? Okay, so अगर VT minus IRA ये टर्म जो बैक EMF वाला टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो n varies as 1 by 5, मतलब inversely proportional to flux. Now if the field current is decreased, if IF decreased, the field current decreased, then what? Then the flux will also drop. If flux drop, then the speed will increase. The speed will increase. So the speed of the motor will increase, right? The speed of the motor will be increased. The A will be the right answer. Now if you ask that how can we decrease the field current, we will put a rheostat type resistor in shunt field, and if we change the value of the resistance, we can control the current, the field current also, right? Okay, okay, so in 60 hertz 50 MVA 15 kilovolt 32 pole hydroelectric generating unit, the values of omega synchronous and omega m synchronous will be nearly. पहले तो जानना पड़ेगा कि what is omega synchronous and omega m synchronous, right? So omega synchronous, that means very easy, we know omega equals to, we know that 2 pi f, right? Omega mean angular velocity, or we sometimes refer as angular frequency, anyway, omega. So whenever we take electrical degree in rotational motion, the change of angular displacement with respect to time is omega, angular velocity. So d theta e dt is omega. Okay, now when we take d theta m, मतलब मैकेनिकल डिग्री जब हम लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, we will get omega m synchronous, ठीक है? So here we can calculate, as frequency is 60 hertz, here the electrical synchronous speed will be 2 into 3.14 into f60, right? f60. now ये कितना आएगा? 376.8. we are taking it as we are taking it as we are taking it as 377 रेडियन पर सेकेंड है इसका यूनिट, रेडियन पर सेकेंड. So 377 radian per second. Now we got one answer is omega synchronous के आंसर हमको पता चल गया. Now omega m synchronous कैसे निकलता है?
we know that equation theta electrical is equals to p by 2 theta m. थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल इन इलेक्ट्रिकल एंड एंगल इन मैकेनिकल के अंदर ये रिलेशन है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू p by 2 theta m. So here if we differentiate both sides then we will get d theta e by dt equals to p by 2 d theta m by dt. So what we are getting here is this is omega synchronous and this is omega m synchronous equals to 2 by p omega s, right? So p equals to 32, so 2 by 32 into 377, right? So we will get here the, if we calculate it, we will get 23.6 radian per second. As both are angular velocity, the unit is same, the 23.6 radian per second. Okay, clear? So the answer C is true. So I think आज के लिए बस इतना ही. आई थिंक आपको यहाँ से कुछ अच्छा जानने को मिला. Please if you like this video, please share and give a thumbs up, and don't forget to subscribe my channel. We will post a lot of technical video as well as non-technical video on general studies paper. Okay, so stay tuned with my channel. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद.